नमस्कार मित्रों, अभिवादन और गुड आफ्टरनून आप सभी को। कल आपने देखा होगा कि एक जजमेंट आई डिविजनल बेंच की दिल्ली हाई कोर्ट में, और जहां पर केस चल रहा था डिफेमेशन का ये केस था मेजर जनरल एमएस अहलुवालिया का, जो उन्होंने दायर किया था। जो तरुण तेजपाल की एक मैगजीन थी तहलका, उस पर खुद तरुण तेजपाल पर उनके साथ जुड़े हुए उनके सहयोगी अनिरुद्ध बहल पर, जो कोबरा के नाम से आपको याद होगा एक संस्था चलाया करते थे जहां वो स्टिंग ऑपरेशंस किया करते थे 2000 के दशक में। ये उसके अलावा जी टीवी पर भी ये मुकदमा था, क्योंकि इसकी जो क्लिपिंग्स थी वो सारी की सारी जी टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी। कल इसकी जो जजमेंट आई है उसमें उनको दोनों को कसूरवार माना गया है, उनसे अपॉलॉजी की बात की गई है, जो आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर उनको हिंदुस्तान टाइम में छपवानी है, प्लस 10-10 लाख रुपए उनको देने की बात कही गई है। मगर ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आपको हम इस चीज को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहेंगे कि दरअसल ये हुआ गया था। केस है 2001 का, जब एक ऑपरेशन वेस्टर्न लॉन्च किया गया था कोबरा की तरफ से। अनिरुद्ध बहल उसको हेड कर रहे थे, और इस तमाम बैकग्राउंड की कहानी और प्लस जो ये कल तक जजमेंट तक बात आई है, इस सारे मुद्दे को आपको बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह शामिल हैं राजा मनीप भाई, और वो आपको बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या था केस, और कैसे पूरी इस केस की यात्रा क्या रही है, और कैसे कल आकर यहाँ पर खत्म हुआ है जहां हुआ है। बीच बीच में हम बात करते रहेंगे, लेकिन राजा भाई, ओवर टू यू। वेलकम टू यू ऑल्सो। नमस्ते महेश भाई एंड नमस्ते टू एवरीवन। बेसिकली कल की जो जजमेंट है ये इन्होंने अपील फाइल की हुई थी कोर्ट में, तरुण तेजपाल ने और उनके पार्टनर ने सामल ने, रिगार्डिंग जो प्रीवियस कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें उनको डिफेमेशन के लिए 2 करोड़ रुपए देने के लिए बोला गया था. So the case was proven to be false, and the court had awarded 2 crore as compensation to retired Major General MS Ahluwalia. So they had filed an appeal saying that we don't have the means to pay for this. हमारा पैसा नहीं है इतना कि पे किया जाए, तो उसका जो है वो कम्यूट करके 2 करोड़ से 20 लाख का कोर्ट ने बोला है कि जमा कराने को, प्लस एक नेशनल अपॉलॉजी देने के लिए कहा है. राइट. तो बेसिकली ये केस जो 2001 का एक बड़ा सेंसेशनल केस था, अगर आपको याद होगा, और व्यूअर्स को उसको याद होगा, कुछ के लिए नया होगा, बट इट वाज अ वेरी सेंसेशनल केस की जिसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो तब की गवर्नमेंट थी अंडर अटल बिहारी वाजपेयी, इट वाज अ करप्ट गवर्नमेंट, और डिफेंस में जो है किकबैक्स जो थे वो लिए जा रहे थे. तो बेसिकली दे सेटअप एक फेक फर्म सेटअप की थी वेस्टेंड के नाम से, वेस्टर्न लंदन के नाम से, और थर्मल इमेज कैमरास जो थे इन्हें नामी को सप्लाई करना चाहते थे. राइट. सो उसको लेकर इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन बेस किया था, जिसमें बेसिकली जया जेटली जी भी थी, जो समता पार्टी उस वक्त थी की प्रेसिडेंट थी. उनके वो जो जॉर्ज फर्नांडिस, हाँ, साथ जो थे उनके, वो भी उसमें शामिल थे. तो बेसिकली ये केस वहां से शुरू हुआ था. बट उसमें वो एलेज क्या किया गया था कि इन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट जो तब के थे मंगारू लक्ष्मण जी, उनको भी ब्राइब दी थी. जया ललिता ने भी जया जेटली ने भी 2 लाख रुपए जो थे वो लिए थे. और काफी डिफेंस के उसमें मुर्गई करके एक थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी इन्वॉल्व थे. उन्होंने भी जो था वो किया था, और काफी डिफेंस अंडर सेक्रेटरी और बाकियों का नाम भी था उसमें, कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एंड आर्मी ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस का एक नेक्सस था. बट इस केस का जो ही सीबीआई ने तो जया जेटली जी को कन्विक्ट भी किया था 4 साल के लिए इस केस में. बट उन्होंने अपील की थी, और क्रॉस एग्जामिनेशन में इट वाज लॉट ऑफ थिंग्स केम आउट. तो ओवर 23 इयर्स के बाद आई थिंक इसमें जो मेन चीज है, जो एमएस आहलूवालिया जी ने जो केस किया था, वो ये किया था कि I have been defamed, and for 23 years my reputation has gone for a toss. उन्होंने क्लेम किया था कि जो इन्होंने दिखाया है, जो ट्रांसक्रिप्ट उनके वेबसाइट पे भी है, वो डॉक्टरेड है. They are not the correct interpretation of what he said in the conversation he had, which essentially Tarun Tejpal and his partner agreed to, and sought apology, and have to pay a subsequent fine. बट अगर इस केस को हम देखें कि इतने सालों के बाद जब इसको अनरेवल करके आप देखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि बेसिकली अगर जर्नलिज्म में कहा जाए, स्टिंग ऑपरेशन जो है ना, देयर आर शॉर्ट मीन्स ऑफ डूइंग एन इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी.
उसका मतलब ये है कि you find a shortcut, you put a camera, you find a shortcut, and then you basically जो investigation आपकी 6 महीने 1 साल या 1.5 साल की पेन्स टेकिंग इन्वेस्टिगेशन एक होती है जो एक एथिकल वे है इन्वेस्टिगेट करने का. You go step by step, you get all proofs, you get all the papers in position, all the proofs in position, and then you do a story. So Stings का ये कहना है कि आप कैमरा लेकर घुस जाते हैं और then you are able to get people on tape saying whatever they want to say. So basically they started this operations from basically from involving touts and then building their case up. So they first approached the touts in defense ministry जो claim करते थे कि they have the say to get things done in defense and get the deals done in defense. But this was more on a deemed basis than on the actual basis. What I mean by that is कि ट्रांसक्रिप्ट्स को हम वन बाय वन देखते हैं. जैसे मेजर आलूवाल पहले मेजर जनरल आलूवालिया का केस देखते हैं तो उसमें क्या था कि they had alleged कि he had asked for 10 lakh rupees and a bottle of blue label whiskey, and 50,000 was paid to him, which essentially is not true. अच्छा, जो इन्होंने वेबसाइट पे भी अपना ट्रांसक्रिप्ट चढ़ाया था, दैट वाज अ डॉक्टर ट्रांसक्रिप्ट. वो जो था वो कंप्लीट नहीं था, उसको उन्होंने कट एंड पेस्ट मतलब ऑब्वियसली एडिट करके चढ़ाया हुआ था, बिकॉज he had said something which was like, I'm telling you as a good friend, it's an advice of a friend कि don't do deal like this or don't do the like this. So it was just a passing reference. Now this man was also invited to a 5-star hotel for dinner and to further set up deals, but he completely refused. He never went there. He never, he kept himself away from this case. Essentially, he never played any role into जिसमें आप कह सकते हैं कि एक definitive role होता है किसी का कि he is aiding or abetting some kind of deal or some kind of trying to influence some kind of judgment. This man largely stayed away from all these cases, but despite him being stayed away, his name was falsely implicated by Tehelka based on their doctored, scripting. तो उसपे जो है ये केस बेस्ड था और उसपे एट द एंड ऑफ द डे व्हेन क्रॉस एग्जामिनेशन हैपेंड इन द कोर्ट, तो एक सैमुअल्स करके थे, ही वाज प्राइम विटनेस. ही आल्सो सेड दैट नो, नाइदर ही टुक द मनी nor he was directly involved in the case. So that tells you that one, at that point of time, if you remember, the sting operations became very very famous in India. एक सेंसेशनलिज्म आया था जर्नलिज्म में कि स्टिंग ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट होता है एंड यू आर एबल टू एक्सपोज पीपल. बट इसका एक बड़ा डार्क साइड भी है, और डार्क साइड ये है कि व्हेन यू आर कैरिंग आउट अ स्टिंग ऑपरेशन, integrity is very very important of a journalist, and your idea of journalism तो नहीं मैं कहूँगा इसको, but your purpose or what is the main purpose of you carrying out, are you impartial, do you have any interest, your self ऑब्जेक्टिविटी कितनी है interest उसमें? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, कुछ वैसा तो नहीं है. तो इसमें अगर आप देखेंगे essentially there is something which happened which was very interesting, and that they also honey trapped quite a few people, right? So and they videographed them. So essentially when you're going to that level where you are, so something in US law में एक होता है that you are leading somebody to an evidence or you're leading somebody to a case. So basically it could be argued that they might be leading somebody to a certain advantage of their what they want to do, because essentially even in today's date and age, honey trap is considered as a worst, much more I would say demeaning kind of corruption than the actual money corruption. And 2001 it was deemed to be very very perversive kind of a corrupt practice. So once you start honey trapping people, then essentially it is not far that you can manipulate anybody to get a result what you want to do, right? You don't know what is happening behind the scenes, and that is essentially what slowly started coming out, because जो जया जेटली जी का भी केस है उसमें भी अगर आप देखेंगे कि they had sent one camera in the briefcase, we had one camera, वो मैथ्यू करके एक था, the man who was actually recording it and doing the case, right? तो उसका एक टाइम में था और एक उसमें था. But when those tapes were played, the timing of what was said on the camera and what was recorded in the briefcase was different. If something was happening here, there was a mismatch. So obviously, that points out to one fact: you had done a cut and edit paste on the tapes. That means that you are, manipulating the evidence in one way or another and trying to point it to a certain direction.
यू आर नॉट बिल्कुल, कैरिंग द होल थिंग, आप पूरी नहीं बता रहे, या आप वही बता रहे हो जो आप बताना चाहते हो और बिल्कुल, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो। तो जब आप हाँ, उस टाइप का फिर आप किसी को फ्रेम करते हो, इट्स एसेंशियली कॉल्ड फ्रेमिंग एंड लीडिंग या ऑन टू फ्रेम, राइट? तो यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन, आपने हनी ट्रैप किया, उससे आपने हो सकता है ब्लैकमेल किया हो, ब्लैकमेल करके आपने प्रेशर डलवाया हो, फिर आपने बिल्कुल, टेप्स को उस तरीके से डॉक्टर्स किया हो कि इसका एक तरीके का ही जो है वो रिजल्ट निकले और लोगों को जो है वो एक ही स्टोरी दिखे। जरूरी नहीं है हुँ, कि जो कन्वर्सेशन वहां हुई हो वो कंप्लीट एक होल कन्वर्सेशन हो, उसका हुँ, कुछ क्रक्स कुछ और हो मैटर का, और आपने जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट कर दिया, that was हुँ, entirely different. And it was a huge scandal because, Bangaru Lakshman had to leave his job. George हुँ, Fernandez had to resign as a defense minister. You know, या army officers were into court of inquiry. The defense, हुँ, bureaucrats were into inquiry. So it did cost a lot of, reputation, I would say, to the not only to the bureaucracy but also to the government and to the military. But या at the end of the day, it is all on, something which you are deeming is going to happen. Look, we all know that in India, defense deal has always happened. This was not the first one. हमने बोफर्स का केस देखा, राइट? So उसमें हमने लीडिंग ऑन देखी, अगस्ता हुँ, वेस्टलैंड का केस है जिसमें somebody is trying to influence defense हुँ, ministry to buy a particular chopper. So all these cases have always been there. हुँ, There is always a clout on deals happening with weapons, and you know how people want to do it. So this is not something हुँ, which is extraordinary. But at the end of the day, the way you doctored it or the way you picturized it in a way, or the way you transcripted the things, points to a fact that हुँ, there was always a bias in your mind, and you wanted something to come out of it according to what you wanted rather than what the real picture is. So I think वहां या पर जो एक है sting operations का, उसके बाद sting operations हमने देखे नहीं largely होते हुए. We did see India Today doing some sting operations in Kashmir on हुँ, separatists, right? But या yes, they were, I mean, uncut versions चलाए थे उन्होंने, जो टीवी पे दिखाया था, हुँ, but uncut versions were available. तहलका या का ये आया था कि they are working with political motive. So तहलका के पीछे जो एक political motive था उनका, because BJP was in power. So I think there was a political motive behind their sting operation, and they wanted to frame the story in that sense. They show BJP as a culprit party and defense minister of corruption हुँ, within the government, rather than हुँ, क्योंकि जो आप ट्रांसक्रिप्ट मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी देख रहा था कि there is a lot of discrepancy between what is actually said and what is actually showed during that time. हाँ, हाँ, ओके, So that also हुँ, tells the intent was never to give a free and fair kind of sting operation, put the whole thing out there. Sorry, I think I lost you. So the या effect, आई थिंक योर वॉइस इज़ it seems like it was always. अब आ रही है आवाज? हाँ, बीच में डिसरप्शन आ रही है। हुँ, अब आ रहा है सर? हाँ, जी, आ रहा है। कैन यू हियर मी नाउ? या आई कैन। तो जो हाँ, तो एक होलिस्टिक पिक्चर होती है किसी भी चीज की, राइट? एक होलिस्टिक व्यू होता है. सो ये ऐसा हुँ, लग रहा था कि वो होलिस्टिक व्यू इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, इन्होंने बड़ा एक वन साइडेड बायस्ड व्यू प्रेजेंट किया टू जस्ट फ्रेम people that and essentially call them out कि these are corrupt and they are trying to manipulate some. हुँ, So that was the loopholes in the case. But Ahluwalia ji का जहां तक सवाल है, it was a brazen, I would say, uh, brazen misinformation what Talca ran against him. Contrary to his not being part of the deal, contrary to his not taking any money, they just went ahead and they said we bribed him, right? So they basically put an allegation on the man, thinking because they were essentially trying to frame others. They just put an allegation on the man and try to make it stick. But he हुँ, fought back, and he fought back hard, right? And हुँ, I think 23 years later, he's been vindicted of what they charged him for. So I think it's a या, long battle, and या, yes, once you are framed as corrupt and everything is there, it takes a toll on you physically, mentally, ओके, socially also. या, So I think it will be या, a huge relief for him to stand vindicted and come out clear after 23 years. 23 साल किसी के आसान नहीं होते जिंदगी के ना, फ्रेम एक शैडो हुँ, में रहना और एक लेबल के साथ रहना.
So I बिल्कुल, think this बिल्कुल। tells you that, I would say the dark side of journalism also, and how media can manipulate its narrative, or how media can, essentially frame people into a certain connotations of corruption or something, and try to get away with it. So that is essentially what Arun Deshpal tried to do with this case. But I think, justice at the end of the day is done, I would say. The truth prevails. The truth always prevails, and I Yes. think the truth has prevailed. Albeit a huge cost, but it has prevailed. Yes, but one thing that I really feel very strongly about is that, this lapse of 23 years is another question mark that is raised on judiciary. I mean, that it took so long. Justice done is all right, but 23 years is almost half of a age of a person. It's like half of the life that has been taken away under the shadow of this kind of shame, and that's another question mark, which needs to be pondered about. That, how do you do that? Nobody gets a right uh, not to deliver a prompt True, justice. because Is also, कहते हैं, justice delayed is justice denied. So it's a sad reality. True, it's a sad reality. No, it's a very sad reality of our justice system. Cases linger on for 10 years, 15 years, 20 years. अब लोग 15-15 साल जेल में बैठते हैं किसी अपराध के लिए, या किसी, for some crime. And at the end of the day, the court has, there is nothing to prove, and the man has to walk free. But he has essentially been locked up 15 years. yes, He yeah, has been exactly, locked up and 15 years for essentially nothing. nothing, and So then there is it's a nobody sad held thing, and I responsible think for that those is where people. I think judicial reform that nobody is responsible. Na? The laxity is that nobody is responsible, because the system is Hmm. such कि cases इतनी देर कोर्ट में चलते जाते हैं, 10-10 साल, 8-8 साल, 15-15 Yeah. साल, Hmm. 20-20 साल. Hmm. I'm sorry. So I think Yeah. this is a travesty in our systems, and I think this is something which, as a country, as a government, the government also needs to think, how to speed up the justice system of this country, how to speed up the trial system of this country, whether it is a civil case or a criminal case. अब तो हो गया है कि criminal case में within 3 years you have to pronounce a judgment, right? So those Hmm. reforms have kicked in. But I think the Hmm. larger question is that, we need huge reforms in judiciary. I'm sorry, Very I true. have a bit of a bad throat. Yeah. But having talking about reforms, I think we need to have timelines for every case or every kind of case, and that has to be done in timelines. Nothing Yeah. can linger on for 10 years, 15 years, 20 years. लोग घसीटते रहते हैं जूते अपने, some people even die waiting for some relief from the court, and it's a sad system. And this whole It system is. needs an overhaul, and the whole system needs reinvention of wheel. It has to move very quickly. It cannot be stuck at a place, in time for about 10 years, and then after 10 years it moves one more step. I think that Yeah. that is something which really, really needs to change. But now that we're talking about it, Raja Saab, I don't have the data in front of me, nor in my mind, that I could talk about. But then, probably, in case it is your knowledge, I mean, you don't necessarily have to answer this question. But do you have any idea whether we have actually enough judges in our judiciary? Is there a shortage or something of the sort? No, there is. I think they are short-staffed at many fronts. There Hmm. you will see state-wise also. You'll see that they're short-staffed. So yes, judges की कमी तो है ही है. But I think the overall system है ना कि ये तारीख पे तारीख चलता जाता है. अच्छा 6 महीने के बाद की डेट है, 3 महीने के बाद की डेट है. And then Hmm. witnesses are not coming. Police is taking time in investigative submission में. वो चलता Yeah. जाएगा case. So I think that is Yeah. something which needs to be looked upon. It has to be on timelines. That I this think, this thing yeah, needs to be you're right. decided in 3 sittings or four Yeah. sittings and get over with. Rather than चलो Yes. next date दे दो, कभी plaintiff नहीं आता, कभी वो कुछ हो जाता है, अच्छा चलो next date दे दो, वो next date भी 3 महीने बाद की पड़ती है, 6 महीने बाद Hmm. की पड़ती है. तो वो जो टाइम लैप्स होता है बेकार का टाइम का, आई थिंक वो जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और शॉर्ट स्टाफ It, तो है ही, ऑब्वियसली देयर इज अ शॉर्ट ऑफ स्टाफ इन जजेस आल्सो. आप आपने वो बात भी बड़ी अच्छी कही कि भाई, नॉट ओनली द क्रिमिनल केसेस जो हैं, जो आपको 3 साल के लिए बाद, बेसिकली हर केस की अपनी एक टाइमलाइन किसी भी नेचर के हिसाब से होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी नेचर का केस हो. इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, इफ आपको कोई सिविल केस है, लैंड से कोई लैंड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, जनरेशंस लग जाती हैं फाइट का. I mean, सालों को गिनना ही बेकार है. आई मीन, इट्स लाइक, यू नो
किसी दादा ने केस किया था और वो पोते को जाके कहीं फैसला मिल रहा है, तो I mean, what is the point? It becomes ridiculous, laughable. It becomes the whole system, So you're absolutely right that ये reforms तो essential हैं, and you know people in power need to think about it. Anyway, No, तो ये रहा I remember, जी, Mahesh ji, I remember, I think there are more than 1 crore cases pending in the court. अब आप खुद imagine. देखो, एक ऊपर केसेस जो है वो पेंडिंग है, तो कब वो Hmm, सुने जाएंगे, कब उनकी तारीख, तो वही है ना, वो फिर दैट इज व्हाट आई एम एसेंशियली टॉकिंग अबाउट, that your yeah, pendencies are so high that how do you, and every day new cases are filed, right? yeah, तो ये yeah, pile up होता जाता है. They will have to find some system to get this machine well oiled and working within time limits. It cannot yeah. be 20 years, 30 years, 40 years. People are waiting for their cases to happen. Something generation by generation. I think Hmm, that you're absolutely right. Justice delayed is justice denied, and that is hmm, not the right way to go about it. But I think that is something which the government needs to look into, which the judiciary itself needs to look into. They need to suggest absolutely. how to fast track the processes and do that. अब लोक अदालत वगैरह ये करते हैं, they found out ways, but I think there's a lot to be desired, a lot to be worked more than just what is happening currently. Right. On that note, Raya Sahab, thank you so much for your time and explaining this case to us. This was just my purpose was to just take it into consideration that everybody is reminded of the entire case and the kind of timelines that were there, and ultimately how it came to this end, and then related stuff that we talked about. Thank you so much for your time today. Thank you, Manish.